very less energy is released for the next level. Here is, we can see that this produces green plants, right, trap the energy from the sunlight. In the photosynthesis, the sunlight energy is converted into the chemical energy and produce the glucose and other substances as a food. It will use its energy for the growth and development, and then average 10% food is remaining as it is in the body for the next level. Now the herbivores eat the producers and therefore producers की 10% energy आती है herbivores में. Herbivores is eaten by the carnivores, so उसकी 10% energy आती है carnivores में. So very less amount of energy is there for the next level, that you keep in mind. So as we move on to the next trophic level, the highest trophic level has the lowest energy. Highest trophic level has very less energy. Energy get decreased as the level increased, right? Yes. So here, so little energy is available for the next level of consumers. Food chain generally consists of 3 or 4 steps. Primary, secondary, tertiary, or 4 level is there. At the most 4 level is there, right? उससे ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि फिर एनर्जी खत्म हो जाती है. There is no energy. 10%, 10%, 10% करके energy get decreased. And therefore at the most after 4 trophic levels there is no energy and very less energy, negligible energy is released into the environment. There are generally greater number of individuals at the lower level. You know that producers are wide variety. Greater number of producers plants are wide variety. Then primary consumers उससे थोड़े कम है. वैसे ही अगर टर्सरी एंड फोर्थ लेवल ट्रॉफिक का देखेंगे तो वाइल्ड एनिमल्स, यू नो दैट प्राइमरी कंज्यूमर्स जितने हैं डोमेस्टिक एनिमल्स की और स्मॉल एनिमल्स की जितनी वाइड वेराइटी है, तो वाइल्ड एनिमल्स की उतनी वेराइटी नहीं है. सो ट्रॉफिक लेवल में जो लोअर लेवल है उसमें वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स है रादर देन द थर्ड लेवल, राइट? Yes, the length of complexity of the food chain. ये food chain जो है, suppose कि मैंने यहाँ पे लिखा था that grass is eaten by deer and it is eaten by the lion or tiger. While we can also write like this कि grass is eaten by some caterpillar, is eaten by the some birds, or caterpillar is also eaten by the frog, and then this eaten by snake and is eaten, that is eaten by some eagle and vulture like birds, kite, right? Okay, so now this is another food chain. Then here we can also say that so here we have seen this energy level pyramid in the food chain, but food chain is not a single branch. That means the producers is eaten by the different primary consumers as well as the primary consumers जो है वो different types of wild animals and small wild animals खाए जाते हैं. That means what? कि this all food chain जो कि single branch है, they interact in between also. It will form a food web. जैसे कि plant is eaten by goat, rabbit, all, and goat and rabbit both is eaten by wolf, while that is lion and tiger उसे खाते हैं. Same way plant is eaten by insect, insect is eaten by bird, bird is eaten by snake and eagle. This is one food chain. Then that insect is also eaten by food, frog. तो फ्रॉग भी सेक खाते हैं तो वो इंटरकनेक्टेड हो गई. दैट मीन्स दिस बर्ड इज ईटन बाय वुल्फ आल्सो, राइट? दैट मीन्स दिस ऑल इज इंटरकनेक्टेड. जैसे आपको बुक में बताया गया है, दिस इज फूड वेब. सो ईच एंड एवरी सिंगल फूड चेन ये है, ये सिंगल फूड चेन इज देयर
and that single food chain is now connected to each and every branch. They are connected to each other, right? इंसेक्ट बर्ड भी खाते हैं, इंसेक्ट फ्रॉग भी खाते हैं. सो दो फूड चेन है एक साथ कनेक्ट हो गई, right? And they will form the food web. So it becomes a complex, right? So the complexity is not easy to understand. Energy flow diagram, ये जो है energy flow diagram है. So each and every level से at least 10% energy is flow. This become clear. The flow of energy is undirectional. ऐसा नहीं है कि एनर्जी इंसेक्ट की एनर्जी बर्ड में ही जाएगी. नो, इट इज अनडायरेक्शनल. वो इंसेक्ट की एनर्जी फ्रॉग में भी जा सकती है, राइट? सो दैट मीन्स अगर इंसेक्ट डाई हो गया एंड देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उसे डेड एंड रीके कर दिया, देन ब्रेक डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस, देन मिक्स विद द एनवायरमेंट भी हो सकता है. सो द फ्लो ऑफ एनर्जी इज अनडायरेक्शनल. उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है. Energy that is captured by the autotrophs, that is producer, does not revert back. जो सनलाइट ट्रैप हुई है प्लांट से वो फिर से एनवायरमेंट में नहीं जाएगी, बैक तो नहीं जाएगी, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में ही जाएगी. एक ही डायरेक्शन में, मतलब वन लेवल टू अनदर लेवल ही जाती, अनदर लेवल में से फर्स्ट लेवल में एनर्जी वापस नहीं आती है. सो दिस प्रोड्यूसर्स हार्बीवर्स डज नॉट कम बैक टू ऑटोट्रॉफ्स. हम ओमनिवर्स टेक द एनर्जी फ्रॉम द हार्बीवर्स. कभी हमने हार्बीवर्स को एनर्जी वापस नहीं की है. वैसे ही प्रोड्यूसर्स विल नॉट गिव द एनर्जी टू द सन, राइट? सो it moves progressively through the various trophic levels. It is no longer available to the previous level. एक लेवल में से एनर्जी गोज टू here, यहां से एनर्जी गोज टू here, will not come back. ये इसे नहीं, ये goat is eaten by wolf. वुल्फ इज नॉट इटन बाय गोट, तो वुल्फ की एनर्जी वापस गोट में नहीं आएगी. दैट मीन्स द एनर्जी इज पासिंग फ्रॉम वन लेवल टू अनदर प्रोग्रेसिवली. आगे ही जाएगी, इट विल नॉट कम बैक, राइट? अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इज दैट कि ये जो फूड चेन है, इट विल प्रोड्यूस द कॉम्प्लेक्स फूड वेब. Each and every food chain is connected and will form a branch, and that is a food web. ये फूड वेब में सिर्फ और सिर्फ ये बायोटिक कंपोनेंट्स ही नहीं है. सपोज दिस प्लांट इज ऑल्सो इन द फील्ड, इन द क्रॉप्स, राइट, फार्म्स, एंड देयरफॉर देयर वी यूज द पेस्टिसाइड्स, दिस वी यूज द इंसेक्टिसाइड्स, राइट? देयर वी यूज द फर्टिलाइजर्स. उसमें जो केमिकल्स है, दैट केमिकल्स इज डिसॉल्व इनटू द वाटर एंड इज ट्रैप्ड by the plant from the root, and that is plant में chemical आ गया. So this chemical is harmful sometimes. That chemicals goes to here and here up to the environment also. In our body, this we are at the last. Omnivores, the large carnivores is at the last, and therefore हमारी body में भी वो chemical of insecticides, pesticides and fertilizers store होता रहता है. राइट? एंड देयरफॉर समटाइम्स वी कॉल दैट कि हम ऐसी बात करते हैं कि वे जब भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स, ऑलवेज बी ट्राई टू वॉश इट प्रॉपरली एंड देन यूज. बट सम पेस्टिसाइड्स इज ट्रैप इनटू द प्लांट बॉडी एंड दैट इज कैन नॉट बी रिमूव बाय वॉश इट. जो हमारी बॉडी में आएंगे ही आएंगे, लाइक व्हीट एंड राइस जो हम खाते हैं, उसमें भी कई पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स आर देयर दैट वी कैन नॉट रिमूव इट. क्यों? उसकी बॉडी में ट्रैप हुआ है. फ्रॉम प्लांट्स टू हार्बीवर्स में जाते हैं, हार्बीवर्स टू कार्निवर्स में आते हैं, हमारी बॉडी में आते हैं, एंड देन वी कैन नॉट, दैट इज वी आर द लास्ट स्टेशन वेयर इट इज डिपोजिटेड. जो हमारी बॉडी में डिपोजिट होता ही रहता है. Enter this is one way in which they entered the food chain. Chemicals are not biodegradable. वो biodegradable तो है नहीं. This get accumulated progressively each and every level में वो जाता रहेगा, right? Chemical energy as human beings occupies the top level of the trophic level में top में human beings है. So this phenomenon is known as biological magnification. Biological magnification मतलब क्या? The maximum concentration of the chemical get accumulated in the human body.
maximum concentration of the chemical is accumulated, मतलब deposit होना in the human body, because this human body is at the top trophic level of the food chain. So that is deposited in our body, that get increased day by day. और वो केमिकल आता कहाँ से है? From the pesticides and fertilizers, right? And therefore this is the reason why our food grains such as wheat and rice, vegetables and fruits and even meat, क्यों? क्योंकि जब पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर वी यूज तो रेन वाटर के साथ डिजोल्व होके वो पॉन्ड एंड लेक में भी जाएंगे, सो फिश बॉडी में भी वो जाता रहेगा, राइट? सो फिश एंड मीट कंटेन वेरिंग अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू. तो जो पेस्टिसाइड्स बॉडी के अंदर ट्रैप हो गया है, वो केमिकल, वो रेसिड्यू, वो लेफ्ट अंदर बॉडी के अंदर ही रहेगा. दे कैन नॉट बी ऑलवेज रिमूव बाय वॉशिंग और अदर मीन्स. हमें वॉश करने से भी हम उसको मिटा नहीं सकते, वो हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है. दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल. अंडरलाइन करो. Human beings occupy the top level in any food chain. The maximum concentration of the chemical may get accumulated in our body. This phenomenon is called biological magnification. Underline karna. This is 1 mark question. Now in tax question is there, what is trophic level? The different levels of the food chain, right? That different organisms, different level of the food chain that feed on one another are called the trophic level. Give example of food chain and state the different trophic level. Here they have written so many food chains over there. Then you can write the first trophic level is always formed by the plants or the producers. Then second is primary consumers like goat, cat, rat, then cow, dog, buffaloes and all. Then secondary consumers, that is dog, wolf, bird, right, frog, snake and all. And then tertiary consumers, lion, tigers are there. So at the end human beings are at the top trophic level. So we can see that. What is the role of decomposers in the ecosystem? That we have already discussed. That role of decomposers are our helpers. They decompose the dead plants and animals, that break down the complex substance into the simpler substance and mix that substance with the environment. So they are very important. Yes. So how do our activities affect the environment? That is all about the environment affected by the human activity. मैंने आपको बताया था कि this is the food chain. Because of some human interaction, ecosystem get disturbed. Like forest का ecosystem deforestation से disturb हो रहा है, right? That use of pesticides and fertilizers that goes to the rivers and lakes that will pollute the water. Same way here. So here is the different food chain is there. Because of the human activity, that animals may not get the food. Some animals, because of hunting and because of some environmental, some human activity, that forest, unke habitats we have, that they have lost, right? So because of the human activity, environment get affected. जैसे deforestation है, building construction है, right? Water pollution because of the use of fertilizers and all. So these are some human activity. Already seen the pollution. Pollution तो हमने देखा ही है, that in the earlier standard we have learned because of such a human activity, water, air and soil get polluted, right? Yes, and therefore environmental problem कौन से हुए हैं? First, greenhouse effect. Second, ozone layer depletion is there, right? The last, global warming is there. Another, what is the big problem here is waste disposal ka problem, right? So these are some environmental problem that we have faced, that we are facing today because of some human activity. Environment get disturbed, uska balance बिखर गया है. So ozone layer and how it getting depleted. Ozone layer, you know that what is that ozone O3? This is molecular formula of ozone. O3 is a molecule formed by 3 molecules of oxygen. O2
is oxygen that we take in our breathing. O2 है तो it is oxygen. O3 है तो it is ozone, right? Yes, ozone is a deadly poison. Underline करो, oxygen is a survival gas. It is necessary for our survival. While ozone is deadly poison at the higher level of the atmosphere. यहाँ पे ozone नहीं है, but in the higher level of the atmosphere, ozone is very important. Why? Because it protects us from the ultraviolet rays, right? From the sun. सन में से जो आ रहे हैं वो रेडिएशन जो हमें हाईली डैमेज करता है. इट प्रोड्यूस, इट कॉज द कैंसर लाइक डिसीजेस, जिससे हमें बचाता है. स्किन कैंसर जैसे ह्यूमन डिसीज से हमें बचाता है. वो है ओजोन लेयर, जो कि हमारे सराउंडिंग्स में नहीं है, बट इट इज एट द हायर लेवल ऑफ द एनवायरमेंट, जो बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज इट गेट डिप्लीटेड. Here, ozone at the higher level of the atmosphere is a product of UV radiation acting on oxygen molecule. Oxygen molecule पर जब UV rays, here UV rays का radiation होता है, then what happen? Oxygen molecule जो कि diatomic है, उसमें से ऑक्सीजन एटम्स अलग अलग होते हैं, और ये ऑक्सीजन एटम जब अनदर ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होता है तो ओजोन बनता है. सो यूवी रेज इज इंपॉर्टेंट टू फॉर्म द ओजोन गैस इन द हायर लेवल. ऑक्सीजन में से टू एटम्स अलग होके वो एटम फिर से अनदर मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होता है, फ्री ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होता है, तब ओजोन लेयर बनता है. सो ऑक्सीजन इज O2, डाईएटम है. वो डाईएटम के साथ एक और एटम ऑफ ऑक्सीजन मिल जाता है, कंबाइन होता है, इट विल फॉर्म ओजोन. द अमाउंट ऑफ ओजोन in the atmosphere began to drop sharply in 1980s. ये जो पोल्यूशन है, because of the human activity, ओजोन लेयर का डिप्लीशन कम होना, वो थिकनेस उसकी कम होना कहां से स्टार्ट हुई? 1980s से. डिक्रीज हैज बीन लिंक्ड टू सिंथेटिक केमिकल लाइक, और वो जो है वो पोल्यूशन कॉजेस बाय CFCs गैस, chlorofluorocarbon, that is chlorofluorocarbons, say, which are used as refrigerants and in the fire extinguisher. ये CFCs गैस जो है that is used in freeze, कूल एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस करने के. आपने ऐसा सुना होगा, फ्रीज जब बिगड़ जाता है तो उसका गैस खत्म हो गया है, तो यू हैव टू फील द गैस इन इट्स कंप्रेसर. तो वो जो गैस है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, दैट इज CFCs गैस है. देन फायर एक्सटिंग्विशर में दिस CFCs गैस यूज होता है, और ये जो केमिकल है इट इज एक्सट्रीमली हार्मफुल विच डिप्लीट्स द ओजोन लेयर. In 1987, United Nation Environment Program, that is UNEP, underline करो, United Nation Environment Program, succeeded in forming an agreement of freeze CFC production at 1986 level. 1986 में उन्होंने यहाँ CFCs गैस पर स्टॉप लगा दिया था. नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू मेक CFC फ्री रेफ्रिजरेटर थ्रू आउट द वर्ल्ड. CFC फ्री रेफ्रिजरेटर, CFC फ्री रेफ्रिजरेटर मतलब ऐसे रेफ्रिजरेटर बनाना है जिसमें CFCs गैस यूज ना होता हो. ऐसे रेफ्रिजरेटर्स nowadays available are there, but they are very costly, right? So library in, okay, so and that means what? कि ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल गैस कौन है? CFCs गैस. Where it used? In the freeze and fire extinguisher, right? Yes. So in the foreign countries now they are trying to use the refrigerator which is free from CFC gas,
right? But now India is not aware about that. हमारे कंट्री में अभी भी इतना अवेलेबल नहीं है. Now managing the garbage we produce. The another most that global problem, that is the waste disposal. Waste disposal, that in our daily activities we generates a lot of waste that thrown away. What are some of this waste material happens after throw away? अगर हम ऐसे ही फेंक देते हैं, सपोज हमने कभी ये भी सोचा है कि जो डस्टबिन, जो कचरे की गाड़ी कॉर्पोरेशन लेके जाती है, उसका वो क्या करती होगी? इफ वी आर अवेयर कि उसका वेस्ट डिस्पोज होता है प्रॉपरली या नहीं, नो, वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट, राइट? सो दैट वी हैव सीन द लाइफ प्रोसेस that the food we eat is digested by the various enzymes in our body. Have you ever wondered why that some enzymes does not break down the everything we eat? हमने digestive system में देखा था कि we have eat the complex food. It broken down into the simpler substance and digest in the digestive system, and the undigested foods is thrown away from our body. So that the why it is not completely digest, enzymes जो है वो completely digest क्यों नहीं कर सकता? Why some waste products are there? Enzymes are specific in their action. Specific enzymes are needed for the breakdown of particular substance. Our body में ऐसे enzymes है जो कोई substance को, प्रोटीन को के लिए different enzyme is there, carbohydrate के लिए different enzyme is there, right? But that is why we will not get any energy if we try to eat the coal. हमारी बॉडी में ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो कि सेल्यूलोज का डाइजेस्ट कर सके, तो हम कच्चे रॉ प्लांट्स नहीं खा सकते क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. अगर हम कोलसा खाएंगे तो हमारी बॉडी में ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो उसे डाइजेस्ट कर सके, तो हम कुछ भी नहीं खा सकते जो डाइजेस्ट नहीं होगा हमारी बॉडी में. क्यों? क्योंकि अवर बॉडी हैव सम स्पेसिफिक एंजाइम, सम पर्टिकुलर एंजाइम जो कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक सब्सटेंस को ही डाइजेशन कर सकते हैं, राइट? दैट इज व्हाई हियर, बिकॉज ऑफ दिस मैनी ह्यूमन मेड मटेरियल लाइक प्लास्टिक will not be broken down by the action of bacteria. Same way, जैसे हमारी बॉडी में एंजाइम्स हैं that can digest the different specific material only, वैसे ही in the environment some specific bacteria is there, some decomposers are there which can decompose the specific material only, not like the plastic. प्लास्टिक और ग्लास का डिकम्पोजिशन हो सके ऐसा कोई डिकम्पोजर्स नहीं है. So will not be broken down by the action of bacteria or any saprophytes. These materials will be acted upon the physical process like heat and pressure, but under the ambient conditions found in our environment, this persists a long time. Ambient conditions, that is extreme condition, that is it is buried into the soil, deep soil. After the 10 years, after that extreme heat and the pressure, again after long time we will get it as it is from the soil. That means that soil bacteria and any other decomposers cannot decompose it. उसका decomposition नहीं हो सकता, right? Yes. Substances that are broken down by the biological process are called biodegradable. So that substance which is called biodegradable वो है, उसका waste disposal easily हो जाता है क्योंकि वो biodegradable है. अगर आप उसको buried into the soil, that will decompose easily, like a wood, plant, waste food products, cloth, right? So these are biodegradable. But the substance that are not broken down by the decomposers, and after long time it will as it is into the soil or anywhere in the environment, it is said to be non-biodegradable. This substance may be inert and simply persist in the environment for the long time. Long time तक अगर soil में है, water में है और wherever in the environment, this non-biodegradable is as it is, वैसे का वैसा रहेगा. It will harm the environment. वो environment को harm करेगा, ecosystem को harm करेगा, right? Yes. And therefore two types of substances there जिसका waste disposal is challenge for us. Biodegradable substance है like waste of the food products,
then dead plants and animals. Then another is cloth and all, papers. This disposal is easier because they are biodegradable. While if plastic है, glass है, they are non-biodegradable. So that is a challenge for us, that how to dispose it, because it will not broken down by the bacteria and it will sustain in a environment for a longer time, which will harm the environment. Right? Yes. Why are some substances biodegradable and some are non-biodegradable? Because the bacteria or the decomposers can decompose only the specific, they have the specific enzymes which can decompose only the specific substance. जो decompose होता है, it is called biodegradable, while the bacteria are not able to broken down, are called non-biodegradable. Give any two ways in which biodegradable substance would affect the environment. Which biodegradable substance would affect the environment? Yes, pollution होता है, right? Biodegradable भी affect करता है while the bad smell is there, right? That biodegradable substance जो है, that stale food हो जाता है, बिगड़ जाता है, उससे smell आती है, right? That is air pollution may be there, right? Okay. Now give any two ways in which non-biodegradable substance would affect the environment. Non-biodegradable substance is affecting the environment, that is soil pollution. Plastic are there that अगर cows and animals खा लेते हैं, then what happen? It will cause death to that animals. Then some plastic and all, that is some chemicals and fertilizers which is not biodegradable and get to the water bodies, will affect that ecosystem. So non-biodegradable is extreme harmful. Biodegradable की इतनी effect नहीं है, bad effect is not there. Right? Yes. So improvement in our lifestyle have resulted in greater amount of waste material generation. जैसे जैसे हम attitude रखते हैं, the packed food लाते हैं, right? So जैसे lifestyle improve होती है, वैसे वैसे waste product generation भी बढ़ती है. The changes in attitude will also have a role to play, with more and more things becoming disposal. जैसे हम घर पे ही खाना बनाते थे, नाश्ता बनाते थे, अब पैक फूड लाते हैं, टीन्स लाते हैं for the cold drinks and all, right? And that waste disposal होता है. पहले दूध की बोतल आती थी, that bottle will be every day replace, उसी बोतल में वापस हमें मिल सकता था. अब पैक आता है कैरी बैग में, प्लास्टिक बैग में, दैट इज वेस्ट, राइट? सो जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल इंप्रूव हुई है, फैसिलिटीज इंक्रीज हुई है, वैसे वैसे क्या हुआ है, वेस्ट जनरेशन ज्यादा हुआ है. डिस्पोजल का चैलेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ अवर एनवायरमेंट, राइट? यस. सो देयर इज हियर एंड ऑफ दिस लेसन. मेन इज इकोसिस्टम, how it is formed and what it comprises, the different level. Then food chain, different topic, that trophic level of the food chain. Then energy and the diagram of the energy transfer from one level to another, that is also important question. Then food web, the different food chain is unbranched, this is also interconnected to each other and form a complex web, that is called the food web, right? Then food web के बाद आता है, it is human activity, right? Yes. So here energy level, sunlight trapped by producers, by primary consumer, secondary consumer and tertiary consumer, right? Top is carnivores or the human beings. Always food web or food chain is starting from the producers. How the human activity affect the environment, and the main two problems we have discussed is depletion of ozone layer and waste disposal. Different types of that waste, it is biodegradable, non-biodegradable, and why it is a problem. So here is the end of this chapter. It is very small, right? Okay, so do it thoroughly. It is very easy. Till then, we'll meet in the next lecture. Goodbye.